viewers. In previous video, we have seen image, audio, and video tags and source tag. Now we will see the table tags. Before of that, we will see the use of iframe. The iframe inline frame tag is used to embed another web page or content like video map into your content current HTML document. Websites. This iframe tag is used for embed another websites like YouTube video or location into your websites. Okay, we will see the how to embed YouTube video in our website. Okay, we have to click on share. Okay, and we will get embed option here. In that we have to click on that and copy the this. Okay, this embed video link. Okay, we have to copy this complete. Okay, and we have to paste it in our HTML document. That is I have pasted here. Okay, this is one video. We will see the output of that. Okay, this is video embedded here. And for embedding map, okay, we have to search here location. After searching we will get share option. We have to click here on share, and after of that a embed option we will get, and copy that HTML document code. Okay, on that we have to click on our HTML doc file and we have to paste it in our HTML file. Okay, this is pasted now, and we will see the output of our that video. Okay, this is the output of map. Okay, now we will see the table tags. Table tags. A table allows you to arrange data in a row and columns, just like Excel sheet. Okay, we will see the example of Excel sheet. Okay, this is the Excel sheet. Okay, in Excel sheet, these alphabeticals are columns. Okay, and this numbered serial is rows. Okay, single square is also called as, and this single one square is called as cell. Okay, this is cell. Okay, now we will see the how to use it. Okay, it's great for displaying structured data like list, pricing, schedules, user information, etc. The table tag in HTML is used to create tabular data like row and columns, just like a spreadsheet or chart. It helps to neatly organize and present structured data. Okay, explanation of tag. Okay, we will see the explanation of tag. First we will use table tag. Okay, now we will see the table tags. Table tag, this is table tag. Inside of table tag we have to use uh, three tags. Okay, first is a table row. First is table row. Okay, all columns are divided into rows. Okay, when we have to give table header. Okay, we have to give the name, which data we are collecting about in that table, which data collecting in table. We have to give the name for that table column name. Okay, now we are using student, we are collecting the student information. Okay,
we are collecting student information. Okay. In first column we are giving collecting name of student. Okay. In second column we are giving age of student and city of student. Okay. This is called as a table header, that is th tag. Okay. And this complete is tr tag. Okay. Inside tr tag, this one is a single cell. Okay. Complete table is divided into tr tag. Okay. We have to insert ts tag inside in tr tag, and a table data in student data in also tr tag. Okay. Now we will use it. Okay. This is we have taken table tag. Okay. In table tag we have to use tr tag first. Inside of tr tag we have to use ts tag. Wait. We have to use ts tag. Ts tag is table header. Okay. Ts tag is table header. Defines a header cell that is in bold and centered by default. When we are using ts tag, that is bold and in centered by default, we are giving first name of student. Okay. We will add border for that. Okay. Inside of table tag we are using border attribute and giving 1. Now this is border is added to that table. Okay. Now second column name is age. Inside of tr tag we have to use ts tag. Okay. Now we have added second column name age, and third column name is city. Okay. This complete one row. The output of our html tag is this. This is divided into columns, and this complete is a single row. Inside of this is tr tag, and this is closing of tr tag. Inside of that we have used ts tag. Now second tr tag we have to add student data. Now first we will add td tag, and inside of td tag adding first ts tag is name. Now we have to add name of student first, Ashok. Okay. Second column is age. Now we have to add td, and inside of that we have to add age of student, that is 23. Now we have to add city of td tag, city of student. Okay. That is Pune. Still we will see the output. This is the output of our first student. Okay. Now we will add a second one more student data. Inside of tr tag we have to use td tag student data, that is we are adding Mauli. Second data is 22. Inside of it td tag is city is Mumbai. This second student data is collected. Okay. This is second student data. Now this is about table tag. Okay. Now we will add next we will see the next more tag. Okay. About more tag. Okay. Inside of table tag border attribute border equal to 1 is quick way to add borders for beginners. This is used for only beginners. In advanced we are using css. Okay. For border attribute. Okay.
We are not giving this border attribute in HTML tag. We are adding it with CSS. Next, we will see the head tag. Okay. First, we will add a head tag. We have collected. Okay. Wait. We have added this one student information before this three column names. Okay. We have to add. This is the head. This is called head. Okay. And then we have to add foot. This yes, sometimes we have to add the student that is total number of student. Okay. That is number of students are 2. Okay. T foot is used for T footer. Okay. Footer data. And T body is used for main data rows. Okay. We will try to add that T head. We will add T head. Okay. Inside of T head we have to add tr attribute, and in that we have to use th tag and add student information. Student information. Now we have to add call span attribute. Wait, sorry. In th tag. 3. Call span is used for merging columns. Something is wait. We have added it outside the table tag. That's why output is missed. Now this is added. 3 columns are merged in this. For merging we use call span. Okay. Call span attribute. Call span one cell across multiple cells. Call span equal to 2. That is, in this example, 2 columns are merged. Row span. Row span is used for merging 2 rows. Wait, I will show the example. Now, in this, we have merged 3 columns. And when we have to merge these 3 rows, we use row span. Okay. Are you getting? Wait. We have used a T head. Okay. Now we will see the next one, T body and T header also we have seen. Now we will see T foot. We will add here T foot, and we are adding total total of age. Total of age. There is no issue when we are adding T foot tag anywhere in our HTML code. Inside of tr tag we have to add ts tag, and here total age. Okay. And in this we have to add call span, and inside of call span we are adding 2 columns, merging 2 columns. Here 2 columns are merged. In third column there is no issue with this foot tag. Okay. There but best practice is to add it this foot tag below this when our
complete data is complete data of student is completed for adding there. This is the output. Okay, now we have to add inside of next we have to add now total of age. Okay, total age equal to 2345. Okay, this is next one. Here is the total of complete students age. This is the output of our table tag. Now attributes. Attributes used in table tag. Many attributes like border, cell spacing, cell padding, align, background color are deprecated in HTML. ये जो attributes है border, cell spacing, padding, ये पूरे के पूरे depreciate हो गए HTML5 में. उसे हम यूज करेंगे CSS के साथ. Okay, we will learn it in CSS. These attributes. Here class and ID are used for styling in CSS. We will also use it in with CSS. Good practices. Use T-head, T-body and T-foot for better structure and accessibility. Add CSS for styling border, not border equal to 1 in real project. जब भी हम रियल प्रोजेक्ट में एट्रीब्यूट्स स्टाइल करेंगे तब ये एट्रीब्यूट्स HTML टैग में नहीं बल्कि CSS के साथ यूज करने हैं. Now we will see form and form controls. What is form? HTML form is a container that collects users input and sends it to server and JavaScript function for processing. This is most powerful and practical part of HTML form and form controls. This is where your user interact with your website, login, sign up, feedback, and payment, etc. Now we will see form tags. First we will see form tag. Form and form controls. Form and form controls. Now first tag is form. In form we have to give action. Okay, form content. We will read about all. Okay, here we have to give slash and give submit here, and inside of form tag we have to add another tags like input, label, text area, selection, button. Okay, first we will add label tag. First is label. Okay, for label first we will add name in name for attribute. This is name. Now for taking input, this is name. Output. Now we have given label. Now we have to give input. Input, and inside of input tag we have to type that text, type the input type, ID and name. Okay, we will take input tag. Inside of input tag first type of input, that is text. There are multiple types. We will see the types.
Ah, here are the multiple types. First is text, second is password, email, number, telephone. We will explain it later. Wait, we have to uh, add the first complete form tag. Okay, here we have typed the input type. Okay, we will see the this is the input box. Here we have to type anything. Now we will see here is button type submit. We have to add one button here below the input. Here button, and type of button is submit. Okay, and here we have to give the name for that button. Text one for that button. This is submit button. Okay, here nothing is happening. Okay, on click here. Now we have created this one form, type of form. This is one type of form. We will see the explanation of that form. First action. Here to first action in this in form tag. First action attribute is given for at sending the data. Where to send data from that. Define specifies the URL where the form data will send after submission. ये जब भी यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तब ये डेटा कहाँ सेंड करना है वो एक्शन को यहाँ फॉर्म टैग में एट्रीब्यूट फॉर्म टैग में एक्शन एट्रीब्यूट में लिख देना है. That is this one is submit. Okay, this is take helpful for collecting data in server. Second method, how to send data. That is there are two methods. We will see that example in detail. Okay, in form attribute there is one another attribute, that is method. Okay, here are two methods are used. First is get, and one more is post. Get and post, these are the two methods that sends data. We will explain it below. Okay, and here is a target attribute where to open the result target value. Okay, use case you can open a thank you page or a result in new tab. Okay, we have seen already in this target attribute in uh, one more in here we have seen that attribute. Yes, this is the attribute that is in href anchor tag. We have seen at target attribute in anchor tags. Okay, here we can add this target attribute in form tag. Here we have to open that page blank. When we are adding blank value, it will open in a new page. Okay, when we click here, it is opening in new page. Okay, and when we are using parent. Okay, wait, we'll try it. Before of this we have tried it, but it is not working in properly. Parent, now it is how it is working. It is opening in own tab. Okay, that is self tag. Okay, autocomplete.
Autocomplete enables and disables input suggestion. There are two inputs for autocomplete. Autocomplete is defines tells the browser whether to automatically fill input field based on previous entities. When here are multiple forms when you are applying for any XYZ company, there are automatically filled when you are uploading your resume. Sometimes automatically below inputs are filled with according to that resumes. Okay, that is called autofill. We will try it in our form tag. Auto Autocomplete, I think. Wait, autocomplete is on and off. There are two values. By default, autocomplete is by default on. When we are using on here, it will suggest something here. Mm, okay, for the user. This is the benefit of that enables and disables. These two suggestions are given. These are the form attributes. Now we will see the label. What is label? Label is used to define text label for input elements. It tells user of what input is for name, email, like this. Okay, we have used this one label. Okay, we will give another one label in label for email. For email, we are using email value. Okay, here next one is input input type email. Okay, here for email, here is one next attribute. This is the suggestion. Okay, we have added autofill option on. Okay, autocomplete option on, that gives you suggestion. Okay, when you click on empty space, this is the autocomplete option. Here are multiple attributes for is link label input by id. Okay, we have given for attribute. Okay, this is the for attribute. This for attribute is linked with type. Okay, label we have given for class id and class are used for styling. That style tag is style attribute is used for inline styling. Okay, css. Title is we have already seen in previous anchor tags and in anchor tags and wait, here we have seen anchor tag and href attributes. Anchor tags we have seen it in anchor tags in video and audio tags also, I think. Title attribute, when we are clicking on title attribute, okay, we will add it. For label, we are giving a right email. When we are clicking here on email, it is giving when we are hovering cursor on email, it is showing title attribute. Okay, this is one. Wait, when we are using hidden. Okay, now I have added here hidden input for input.
When we are using hidden attribute, it will directly automatically goes disappears from screen. Okay, this is hidden attribute, and this is language attribute. One language attribute is used. Okay, now we'll take a label for city and label for city. Okay, we'll take lang attribute. Here we will take Hindi. Okay, city. Okay, this is lang attribute that will directly show. Okay, we have to add input type. Okay, for input we'll add here one. Okay, type. I think yes, this is input lang attribute. Okay, explanation of this. Okay, this we have seen also. Okay, form attribute. This is the form tag. It creates where to user can enter data. Submit action tells the browser where to send data from where the user click on submit. ये जो uh, ये जो एक्शन बटन है यहाँ के सबमिट बटन के लिए काम करता है। जब यूज़र सबमिट पे क्लिक कर देगा तब ये यूज़र ब्राउज़र को बता देगा कि ये डेटा सेंड कहाँ करना है। In case the data will be sent to submit/submit page or endpoint on service, ये सर्वर को भेज देगा डेटा। Here method attribute tells the browser how to send data. That is, methods are two methods. First is get and second is post. We will see it in next. First get method sends data through URL. मेथड क्या करता है, ये डेटा ब्राउज़र को बता देता है कि ये डेटा कैसे सेंड करना है। गेट मेथड से यूआरएल से डेटा सेंड हो जाता है। जब ये सबमिट पे क्लिक कर देता है यूज़र, तब ये इस यूआरएल में से डेटा सेंड किया जाता है सर्वर को। और नेक्स्ट है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड सेंड्स डेटा इन बैकग्राउंड, मोर सिक्योर, ideal for sensitive like पासवर्ड और पर्सनल डेटा। ये पोस्ट मेथड में क्या किया जाता है, जब हम यहाँ मेथड में पोस्ट लिखते हैं ना, तब ये डेटा बैकग्राउंड में से ही चला जाता है। ये यूज़र को यूआरएल में कुछ भी नहीं दिखता। जब ये यूज़र सबमिट पे क्लिक करता है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। ये कैसे कहाँ से गया ये सर्वर को, ये यूज़र को कुछ पता नहीं चलता। ये मोर सिक्योर है, इसलिए पासवर्ड पर्सनल डेटा सेंड करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में। So here we are using post because we want to securely send the form data. Post method is used for security purposes. Label for name equal to name. Label inside label tag name is given. This is a label. It's the text shown to the user to take input box. Okay. ये क्या करता है, ये जो इन टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये यूज़र को बता देता है क्या इनपुट क्या करना है। यहाँ पर जैसे कि नेम आया है, ये यूज़र को बता देता है कि आपको यहाँ पर नेम डालना है।
दैट इज माउली। ओके। ये यहाँ पर क्या करना है बता देता है ये। यहाँ पर ईमेल डालना है। ये ईमेल डाल दिया। ओके। ये ईमेल डाल दिया। यहाँ शहर में अहिल्यानगर। ओके। ये ये लेबल क्या करता है, यूजर को बता देता है कि आपको कौन सा डेटा फिलअप करना है इनपुट टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में। ओके। फॉर नेम क्या करता है, फॉर नेम एट्रीब्यूट है। दिस एट्रीब्यूट कनेक्ट द लेबल टू इनपुट बॉक्स विथ आईडी। ओके। ये फॉर नेम क्या करता है, ये इनपुट बॉक्स को आईडी से कनेक्ट कर देता है। ओके। वी हैव टू टेक एट्रीब्यूट इन id attribute in input box. Okay, this will tell the browser to connect that data with name attribute. Okay, why is this important? Because when you click the label name, it automatically focuses the input box. This improves user experience accessibility. ये यूजर इनपुट की एक्सेसिबिलिटी improve कर देता है। This label is taking about input field with id। ये इनपुट फील्ड क्या करता है, मतलब क्या, ये लेबल में फॉर नेम में दिया जाता है ये नेम। ओके, बता देता हूँ कोड से। ये लेबल में फॉर नेम दिया है और जो इनपुट में यूजर इनपुट में टाइप कर देगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी जो टाइप कर देगा वो कनेक्ट किया जाएगा आईडी से। इसका कनेक्शन लेवल का कनेक्शन आईडी से होता है यहाँ पर इनपुट बॉक्स में। ओके। ये सर्वर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके। इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, we will see this in input type text id name for name equal to username. This is the text input where the user type their name. ओके। ये क्या करता है, इनपुट में यूजर को बता देता है कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है। ओके, आपको एंटर करना है नेम। ओके, टाइप टेक्स्ट दिस टेल्स द ब्राउजर प्लेन ब्राउजर इट्स प्लेन बॉक्स। ओके। ये टाइप क्या कर देता है, यूजर को ब्राउजर को बता देता है कि ये प्लेन बॉक्स है। ओके, ये प्लेन बॉक्स है। ये जो दिख रहा है वो इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन है। ओके, इसे टाइप कहते हैं। ओके। टाइप एट्रीब्यूट्स में वैल्यू बहुत सारी है। टाइप एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट इज ए सिंपल सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट। पासवर्ड फील्ड है। पासवर्ड है hides the typed text using dots or asterisks. We will try this one also. Okay, we will take password input. Okay, label equal to password. We'll type here password। इनपुट में टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर पासवर्ड लेना है हमें। ओके, यहाँ पर आईडी पासवर्ड। ओके, यहाँ पर ये जब भी यूजर कुछ भी टाइप करेगा वो डॉट में या तो एस्टेरिस्क में दिख जाएगा। ये डॉट में दिख रहा है अभी। ओके, ये पासवर्ड है। ईमेल accepts and validates email format automatically। ईमेल जब भी हम यूजर यहाँ पर टाइप में ईमेल लिख देता है, टाइप वैल्यू इक्वल टू ईमेल, वो ईमेल डिटेक्ट कर देता है। यदि कौन सा
एक आधी यूजर क्या करता है, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता है और सबमिट करने का प्रेस कर देता है, तब ये सबमिट नहीं होता है। ये वार्निंग देता है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ओके, इसके ईमेल का टाइप इक्वल टू ईमेल लिख देना है, इनपुट ईमेल लेना हो तो। नंबर में क्या किया जाता है, 0 to 9 नंबर्स लिए जाते हैं। यहाँ पर मीन और मैक्स एट्रीब्यूट लिए जाते हैं। ओके, we will type here, we will take label equal to phone। ओके, फोन में क्या करते हैं, मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल लिया, इसमें इनपुट लेते हैं, टेक्स्ट नहीं, नंबर लेना है अभी। नंबर, नंबर आईडी इक्वल टू फोन। ओके, एंड हियर वी हैव टू टेक मीन। मीन में 10 लिख देना है। ये कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पर टाइप करते वक्त ये सेट कर देता है, लिमिट सेट कर देता है, मीन मैक्स। ओके, ये अभी काम नहीं कर रहा ठीक से, उसे अभी हम बाद में पढ़ेंगे जब भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, ये डेट, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, ये सेम वर्क करते हैं। ओके, यू कैन ऐड जावास्क्रिप्ट टू मेक डू समथिंग। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी ये डेटा सबमिट करना हो, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड की जाती है हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, वी विल सी इट इन नेक्स्ट। ओके, ये हम आगे देखने वाले हैं प्रोजेक्ट के वक्त कैसे ऐड करना है, क्या आईडी। दिस इज यूनिकली आइडेंटिफाइज द इनपुट यूजर यूजफुल फॉर स्टाइलिंग है। आईडी क्या किया जाता है, इनपुट दे स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। नेम क्या करता है, दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट, दिस नेम इज की सेंड्स टू सर्वर। ओके, ये नेम क्या करता है, सर्वर को सेंड करने के लिए यूजफुल होता है। When the form is submitted, it sends data like this username। ये सर्वर को डेटा ऐसे सेंड किया जाता है। So the server can access the data using key। ओके, ये की है ना, इससे डेटा आइडेंटिफाई कर देता है, एक्सेस करता है। अब बटन्स, बटन टाइप, ये बटन टाइप, this is the button, this is the submit button। when user click this, the form data is collected and sent to URL, sent to the URL using post। ये URL की मदद से सेंड किया जाता है डेटा। ओके, ये सबमिट बटन है यहाँ पर। ओके, विल टेक वन ब्रेक हियर। ओके, 1 minute। ओके, we will short we will in short explanation, form creates a form, action where to send data, method how to send data। ये पोस्ट मेथड से सेंड करना है, गेट मेथड से सेंड करना है, इसलिए मेथड यूज किया जाता है। लेबल फॉर आईडी, लिंक द लेबल टू इनपुट। इनपुट फील्ड को लिंक करने के लिए ये लेबल फॉर आईडी, आईडी फॉर एट्रीब्यूट लिया जाता है। कलेक्ट्स यूजर इनपुट, इनपुट से क्या किया जाता है, यूजर का इनपुट लिया जाता है। नेम कीवर्ड फॉर टू रिसीव डेटा। बटन सबमिट्स द फॉर्म, ये जो बटन है इसे फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट बटन का उपयोग किया जाता है। ओके, ये इजीएस्ट वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं अभी। जितना भी समझ आ रहा है समझ लेने का कोशिश करो और प्रैक्टिस करते रहो।
और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।